जिसको हम लोग बोलते हैं कि यू कैन से आवर प्रोफाइल पेज एंड वेयर वी कैन गेट our all these services which is facilitated for me. Okay, I can transfer the money, I can check the balance, I can check the credit score and everything. Okay, but for transferring the money again I need the customer ID. लेकिन क्या हो रहा है कि लॉगिन करने के बाद जब ये इस पेज में जा रहा है तो कस्टमर आईडी का डेटा मेंटेन नहीं कर पा रहा है राइट नाउ. So it cannot able to maintain the state because server cannot able to maintain the state of its client. तो कस्टमर आईडी का वैल्यू रिटेन नहीं कर पा रहा है, जिसके चलते we cannot able to transfer the money because for transferring the money I need the customer ID because based on the customer ID I'll just fetch your like amount and then we are going to update that amount, right? Based on the customer ID I need to check your balance. It's like that, select balance from account where customer ID is this. Based on the customer ID we are checking our credit score. So everywhere I need this customer ID and that I need to track it, right? So that if we are sending the request through the HTTP protocol, after generating the response, right, this customer ID is not going to be tracked actually. So I need some tracker mechanism, right, so that it can be tracked. So they introduced in Servlet API, they introduced the concept of cookies. Okay, the concept of cookies. They introduced the concept of HTTP session and session management. They introduced the concept of hidden form field. Okay, HIDDEN, hidden form field. Okay, then we have the concept of URL rewriting. Okay, URL rewriting. So these four mechanisms they introduced to just track the particular session so that server can able to identify about its client. Okay, so that is called session management technique. So generally what we are doing, we'll create a cookie, and with the cookie we'll just bind our object, this customer ID, and we'll add that particular cookie object with the response, and along with the request again the cookie will come to the server, and from that particular cookie we can fetch the customer ID and we can able to like we can able to track the session. So now let me write something about the cookie. Okay, so cookie we can say is a small text file. Okay, text file which store textual information as key and value pair. Okay, cookie is a small text file. That's see, I need to track some information, right? So I have to store some information. That is the reason it's a small file which stores some textual information only, right? Means only like string information, string data we can able to store, text data we can able to store. Okay, but that in which format? In key and value format. Okay, now second thing, cookie is created at server side. Okay, so cookie we are creating at the server side. Okay, so we are cooking, if we want to create a cookie, that cookie we need to create at the server end. Okay, and along, and then we add the cookie with response header. अच्छा, तो अब क्या करेंगे, कुकी बना लिए, उसके पहले एक चीज और कर दे, we set the value with cookie, ये भी लिख देते हैं, cookie बना लिए, we'll create the cookie, we'll set the value of the cookie. Okay, we will set the age of the cookie. Okay, age of the cookie, cookie का age set करेंगे, cookie कितना टाइम तक अवेलेबल रहेगा, राइट?
So there is some methods are there to set the age of the cookie. So we'll create the cookie at the server side. We'll set the value with the cookie. We'll set the age of the cookie, and then we add the cookie with the response header and send the cookie, that cookie, to client side. Okay, so cookies are stored at the client area. So if you see the cookies are created at the server side and cookies are stored at the client area. Okay, next thing is what? Along with the request, cookie comes to server side from client. Okay, फिर जब client request करेगा, so cookie can able to, along with the request header, you can say along with the request header, cookie right, comes to server side, uh, right, from the client end. तो ये हम लोग का कुकी का ये बिहेवियर है। कुकी बनता है सर्वर में, कुकी के साथ वैल्यू सेट करते हैं हम लोग, कुकी का एज सेट करते हैं, कुकी को देन वी ऐड द कुकी विद द रिस्पांस हेडर के साथ उसको सेट करते हैं कि कुकी कैन बी सेंड टू द क्लाइंट एंड एंड अलोंग विद द रिक्वेस्ट हेडर। फिर जब रिक्वेस्ट हम लोग भेजते हैं तो रिक्वेस्ट के साथ कुकी का इंफॉर्मेशन भी उस सर्वर में चला जाता है एंड बेस्ड ऑन द कुकी नेम वी कैन एबल टू फेच द कुकी वैल्यू। ओके, सो we can able to fetch the entire cookie. We can able to fetch cookie value based on name of the cookie, based on name of the cookie. So this is what we have to do with the cookie. So cookie we have to create, we have to set the value with the cookie, and we have to set the age of the cookie, and then we have to add the cookie with the response header and send the cookie to the client side. Along with the request header, cookie again will come to the server side and we can able to fetch the cookie value based on the name of the cookie. So cookie having some disadvantage actually. Cookies are not secure. Cookies are not going to store the huge amount of data, only 8 KB 8 KB information we can able to store. And cookies actually is not secure because cookies are created at the server side along with the along with the response, it's going back to the client side, and from the client side along with the request again coming to the server side, right? So it's not secure because it's communicating with client and client server communication is not secure, right? So that is the reason cookies are not secure and it's not going to support the huge amount of data, and only we can store the textual information, or you can say the string data we can able to store inside the cookies object. Okay, let me just create a cookie so that we can able to understand this part actually, how to like maintain or track our session using cookie. So now let's move to this particular our Eclipse part so that we can understand how to explore the cookie part. Okay, and what to do with the cookie with the servlet. Okay, so let me just हेलो सर, yes 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 कुकीज से पहले आपने क्या पढ़ाया? बस ये cookies ही स्टार्ट किया हूं मैं। यहीं से मैंने स्टार्ट किया। मैं एक्चुअली बता रहा हूं कि कल मैं क्या बताया कि HTTP प्रोटोकॉल हम लोग का स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। स्टेटलेस का मतलब क्या बताया कि जब भी हम लोग रिक्वेस्ट सेंड करते हैं इस प्रोटोकॉल के थ्रू सर्वर के पास, करेक्ट, सर्वर क्या करता है, सर्वर को क्या कल मैं क्या बताया, सर्वर इज रिस्पॉन्सिबल टू एक्सेप्ट दैट रिक्वेस्ट, प्रोसेस दैट रिक्वेस्ट and send the response back to the client, right? Now if I use HTTP protocol, server is going to forget about its client. Now I need some mechanism so that server can able to remember about its client. That is the reason we are using some session tracking mechanism or state maintaining mechanism, you can say. That is
cookie. I told about the session is very very important actually. I'll come that part also. Then we have this URL rewriting, we have the hidden form fields. So these are the session tracking mechanisms they provided so that the client server can able to identify about its client. अब मैं एक सिनेरियो बताया कि मान लीजिए जब भी हम लोग ऑनलाइन बैंकिंग पोर्टल में, राइट, हम लोग अपना कस्टमर आईडी दे के लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद हम लोग का एक पेज, वेब पेज जनरेट होता है जिसमें हम लोग का सर्विस का फैसिलिटी दिया रहता है कि यू कैन एबल टू ट्रांसफर द मनी, यू कैन एबल टू check your balance, you can able to check your credit score and everything, right? So now think if this request will be like starts or sent by the HTTP protocol, तो लॉगिन करने के बाद सर्वर क्या करेगा, इस कस्टमर आईडी को याद नहीं रखेगा, राइट? तो फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, एवरी ट्रांजेक्शन के लिए मुझे लॉगिन करना पड़ेगा। ट्रांसफर मनी के लिए एक बार लॉगिन करना पड़ेगा, चेक बैलेंस के लिए लॉगिन करना पड़ेगा, चेक क्रेडिट स्कोर के लिए भी लॉगिन करना पड़ेगा, करेक्ट? तो हम चाहते हैं कि हमको बार बार लॉगिन नहीं करना पड़े, हम इस कस्टमर आईडी को मेंटेन करना है, क्योंकि कस्टमर आईडी के थ्रू मुझे मनी भी ट्रांसफर करना है, दैट कस्टमर आईडी के थ्रू मैं बैलेंस भी चेक करना है, स्कोर भी, क्रेडिट स्कोर भी मुझे चेक करना है। तो आई नीड सम ट्रैकर, राइट, व्हिच कैन मेंटेन द like this particular records and everything, right? So they introduce cookies first. Cookie is a small text file actually, okay? So cookie एक फाइल है, okay? जैसे हम लोग cookie का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, it can store the data into key and value pair, where we can store only the textual data and very limited data, right? कुकीज का क्या है कि ये सर्वर के साइड में हम लोग बनाते हैं, कुकी को हम लोग बनाते हैं किस साइड में, सर्वर साइड में। एंड कुकी के साथ हम लोग क्या करते हैं, उसके साथ कुछ वैल्यू सेट करते हैं, जैसे कस्टमर आईडी को सेट कर देंगे उसके साथ, ओके? विल सेट द एज ऑफ द कुकी। कुकी दो तरीके का होता है, टेम्पररी कुकी और परमानेंट कुकी, ओके? तो टेम्पररी कुकी और परमानेंट कुकी हम लोग एज के अकॉर्डिंग सेट करेंगे, तो यू कैन एबल टू सेट द टेम्पररी कुकी, यू कैन एबल टू सेट द परमानेंट कुकी आल्सो based on the age. You can set the age of the cookie for 24 hours. We can set the age of the cookie for 2 seconds, 30 seconds, 30 minutes, like that. So that I'll save you. And we can add the cookie with the response header. तो cookie को हम लोग पूरा बना के, values add करके, सब कुछ add करके उसको client के पास भेज देते हैं, response header के साथ उसको client side में भेज देते हैं, और cookies are stored at the client area. And फिर से cookie क्या होता है कि जब भी हम लोग फिर से रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, तो along with the request cookie again comes to the server side and we can able to fetch the cookie value based on the name of the cookie. तो ये है कुकी का सारे इंफॉर्मेशन। अब कुकी कैसे बनाएंगे, कैसे उसमें वैल्यू सेट करेंगे, कैसे उसको फेच करेंगे, कैसे उसको रिस्पांस हेडर के साथ करेंगे, दैट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट, करेक्ट? ओके सर। So now let me, in the same project, I'm not going to create a new project, in the same project का नाम था वेब प्रोजेक्ट जुलाई बैच, yesterday we have did. तो आई थिंक सागर सर हम लोग का जो रिक्वायरमेंट दिए थे उसमें ये सेशन कुकी का यूज हम लोग कर सकते हैं। क्या रिक्वायरमेंट दिए थे सागर सर, एक बार थोड़ा सा आप लोग बताइए तो मुझे। वजीद आपको याद है जो क्या बोले थे कि पहले फर्स्ट नेम बोल के एक टेक्स्ट बॉक्स होगा, राइट? ये एक टेक्स्ट बॉक्स होगा, उसके बाद से लास्ट नेम बोल के एक टेक्स्ट बॉक्स होगा, राइट? उसके बाद से एक बटन होगा, क्लिक करेंगे तो ये चला जाएगा फिर नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट पेज में। लेकिन ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का वैल्यू मुझे ट्रैक करना है, तो इधर हमको कोई भी कुकी के ऑब्जेक्ट के साथ ट्रैक में सर वैलिडेट करना होगा ना, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वैलिडेट भी करने के लिए बोले थे। देखिए वैलिडेशन और ये सब ऐड करने जाएंगे ना, तो इसमें बहुत एक्चुअली जावास्क्रिप्ट भी सिखाना पड़ेगा, तो फिर इसी में टाइम चला जाएगा। हम लोग का स्प्रिंग बूट कल से स्टार्ट कर रहे हैं, वैलिडेशन सब हम लोग रेस्ट एपीआई में करेंगे, इसमें जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं ये बोले वैलिडेशन का बोलेंगे तो मैं बोलूंगा कि सर नेक्स्ट में करेंगे हम लोग ना, आप लोग क्लाइंट साइड वैलिडेशन तो सीखेंगे ही जावास्क्रिप्ट से, समझ गए ना? ठीक है, ठीक।
क्योंकि नहीं तो आप लोग का ही होगा, मुझे कोई नहीं, मैं जावास्क्रिप्ट पढ़ा सकता हूँ। अभी ये सर्वलेट बताइए, सर्वलेट एक दिन का बात नहीं है, सर्वलेट हाँ सर, पढ़ने वही में तो कम से कम टाइम लगता है। एक दो महीना टाइम लगता है। यदि अच्छा से सर्वलेट कोई पढ़ा है तो सर्वलेट में फिल्टर है, बहुत सारा लिसनर है, तब पर भी मैं आप लोग को ये बोले हैं इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये एक्चुअली जरूरत नहीं है हम लोग को। फिर नेक्स्ट क्या है हम लोग का, क्या वो क्या बोले तो वही मैं सिनेरियो एक बनाता हूँ। फर्स्ट नेम लास्ट नेम को बाइंड करेंगे किसके साथ, एक ऑब्जेक्ट के साथ, सेशन का ऑब्जेक्ट हो या कुकी का ऑब्जेक्ट हो। उसके बाद से क्या बोले, उसको फॉरवर्ड करना है नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में क्या मांगेगा, फोन नंबर, और वो बोले थे एड्रेस, ठीक है ना। यदि वैलिडेशन बोलेंगे तो वैलिडेशन भी मैं करवा दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या है कि अननेसेसरी वो बड़ा ये हो जाएगा। BUTT पॉइंट बटन, ठीक। फिर नेक्स्ट क्या बताए थे वो, याद है आप लोग को, प्रोजेक्ट। नहीं सर, भूल गए, बहुत दिन हो गया ना सर, भूल गए थे। अरे याद नहीं। हाँ, नेक्स्ट पेज में फोन और एड्रेस होना चाहिए ना, ये तो है। नेक्स्ट पेज में, अच्छा अच्छा, इधर तो डिस्प्ले होना चाहिए, ओके। तो डिस्प्ले फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड लास्ट नेम, उसके बाद से हाँ, फोन एंड एड्रेस, और नेक्स्ट में सपोज पैन ले लिए, और ये ले लिए, क्या बोलते हैं आपका, आधार कार्ड, आधार। आधार ले लिए, ठीक। हाँ हाँ, अच्छा, डिस्प्ले फर्स्ट नेम लास्ट नेम फोन एड्रेस पैन एंड आधार। यदि टाइम रहेगा ना तो कल थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का बता के आपको, क्योंकि वेब बेसिक्स में हम बताएंगे आपको ये जावास्क्रिप्ट का वैलिडेशन, एक दिन के लिए दिया, यही है ना हम लोग का। ठीक है, चलिए इसको ही डिजाइन करते हैं। तो पहले एक HTML बनाएंगे इसका, ओके। सो विल क्रिएट वन HTML, उसके बाद से HTML के बाद से सबमिट करेंगे तो एक सर्वलेट में जाएगा। उसके बाद से इसके लिए हम लोग बनाएंगे JSP, ओके, क्योंकि डिस्प्ले कराना है, इसके लिए भी हम लोग बनाएंगे JSP, और इसके लिए भी हम लोग डिस्प्ले करने के लिए, व्यू करने के लिए JSP बनाएंगे। व्यू will we will create is JSP, ओके। तो मैं क्या करता हूं कि मिनट, पहले हम लोग वेब ऐप फोल्डर में एक राइट क्लिक करके जस्ट विल क्रिएट वन HTML फाइल, क्योंकि कल मैं आप लोग को ना करिकुलर जो हम लोग का टॉपिक्स है, टॉपिक वाइज मैं आपको कल व्हाट्सएप में किया हूं कि मंडे क्या हम लोग करेंगे, ट्यूसडे क्या करेंगे, हाँ। तो उसको थोड़ा सा देखिए, क्योंकि वही हम लोग का टॉपिक है, उसी के ऊपर हम लोग का प्रोजेक्ट भी बनाना है, वही हम लोग को करना है मेनली। तो इधर हम लिखेंगे कि फर्स्ट, ওয়েব অ্যাপের ভেতরে এইচটিএমএল ফাইল বানাবো তো? हाँ हाँ हाँ, first input.html I have created, okay. So here let me just make it little center, you can also use some more attractive, but इसमें ज्यादा इसमें फोकस मत करिएगा, एक बार सागर सर को दिखा के यदि कुछ ऐड करने के लिए बोलेंगे तो हम लोग ऐड कर देंगे, अदरवाइज
इसको एक बार समझ जाइए फ्लो, बस उतना काफी है। उसके बाद से हम लोग वेब सर्विस रेस्ट एपीआई स्प्रिंग बूट में जाएंगे, हम लोग रेस्ट एपीआई ये करेंगे जो हम लोग का प्रोजेक्ट करना है। तो इधर करेंगे हम लोग स्काई ब्लू और कुछ भी उसमें बहुत, और इसमें लेंगे हम लोग लेवल फॉर फर्स्ट नेम, ओके, फर्स्ट नेम, input type equal to text, name equals to text box 1, okay, then level for second name, sorry, second name, last name, and last name, so text box 2. This is the identifier I'm giving, and everything will should come inside the form tag. Form action equals to rage1 लिखता हूँ, rage1 servlet, okay. So rage1 I'm giving the request name, okay, I can give any name of the request, and now I'm using the method equals to post, okay. So this will be more secure, and to create any resource always we should use the post method, okay. Always you should send the request to the post method form, और एक बटन बनाते हैं, input type equals to submit, value equals to save, okay. So this is the thing we have done, okay. So now this I created rage1, let me just rage1, and rage1 is the request name. So let me go to the, so this is the web app. Inside the web app I have created this first input.html. first input में ये दो पेयर रहेगा, correct. Username we have to store the first name and the last name, okay. Now I'll go to the src slash main slash java controller package. Inside the controller, or I'll create one more package over here. See, I'm going to create one more package. I'm going to create cg dot task package. This is the task given. So একটু স্লো স্যার, একটু স্লো। এই তোমরা সাথে সাথে सर ये করছো, वाला सर एक सेकंड से इसको थोड़ा হ্যাঁ হ্যাঁ করিয়ে না স্যার আমরা সাথে সাথে করছি অ্যাকচুয়ালি ওই জন্য। ও আচ্ছা আচ্ছা করো করো। হ্যালো স্যার, হুম স্যার ওই ফর্মের ভেতরে যেখানে মেথডটা দিয়েছিলেন, তো ওই পোস্টটা কি কেস সেনসিটিভ নয়? না না না, পোস্টটা কেস সেনসিটিভ না। তুমি পোস্ট এইভাবে দিতে পারো, পোস্ট এইভাবে দিতে পারো। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে ওকে ওকে। আর না না সরি সরি, once you complete please let me know everyone. So we used here form we have to close. So first input we are taking, first pair we are taking, and we are, এটা না করলে আবার উনি খারাপ ভাববেন, তাই জন্য এটা করে আমরা 8 তারিখে চেক করবেন, তার আগে আমরা এটা করে নিয়ে কাল থেকে আমাদের যে প্ল্যান আছে এই প্ল্যান অ্যাকর্ডিং চলবো। কালকে প্ল্যানটা আমি একটু মোবাইলে আমি জট ডাউন করেছিলাম, তোমাদেরকে পাঠিয়েছি, দাঁড়াও 2 মিনিট। सर एसआरसी मेन जावा में क्या पैकेज बनाना था? हो गया, आप ये हो गया सबका, अभी आपका हो गया ये वाला? हाँ सर ये everyone completed this? Yes sir. Okay, यस सर। let me just go to the src slash main slash java में एक न्यू पैकेज बनाते हैं। सो पैकेज का नाम देते हैं cg dot task dot controller, मतलब कंट्रोलर नहीं देखते हैं, ड्राइवर और समथिंग कंट्रोलर पैकेज है ना, okay, so
cg.task.drive. Okay, so everyone please create this package cg.task.driver. Okay, inside this package create one new servlet. Okay, servlet. So servlet name I'm giving here input registration reg1 servlet, reg1 servlet. Okay, or register, you can say reg servlet 1, reg servlet 1 suppose. Okay, registration servlet 1. Okay, so just to get to post method only we need. Okay, so inside that I have created this servlet. Okay, now yesterday already you all understood we mapped our request using the web.xml file, right? तो सर्वलेट भी बना लिए, मेरा फर्स्ट इनपुट डॉट एचटीएमएल फाइल भी है, राइट? और व्हाट इज द एक्शन नेम आई गिवन हियर? reg1. reg1 को कॉपी करिए एक्शन, बिकॉज फर्स्ट वी नीड टू मैप द रिक्वेस्ट. ओके, so yesterday we mapped our request using the web.xml file. Okay, but today I'm mapping the request using very simple way by providing this annotation, web servlet annotation. So yesterday whatever we have did inside the web.xml file, the same thing is going to be accomplished, or same thing you can achieve using this annotation. This annotations is the part of servlet API, which resides in this package javax.servlet.annotation package. This particular web servlet annotations reside. Okay, this annotation is a single value annotation which can be tagged with the class. Okay, so what is the purpose of this annotation? This annotation is used to map the request. So we are going to map our request. So first input dot html file, we have the form action equals to reg1, and here we given this reg1. See, annotation we have used. So this can be mapped. The same code is going to be written internally. So web.xml file, we no need to generate the web.xml file in this case. So it can be mapped that particular request, and this class is going to be loaded or executed, this servlet class. Okay, now second thing is what? Second thing, this request is going through which method? Post method. So I told you in the last class, servlet having three lifecycle methods: init, service, and destroy. Init is going to be called only once in the entire life cycle of the servlet. Service is going to be called many times whenever the request will come to the server. And destroy also is going to be executed or called only once by the web container. Everything is going to be called by the web container. Okay, we are not going to call any methods. Okay, so here if I'll send the request through the post method, so which service method will be executed? Do post is going to be called. Okay, so do post is the method of which class? Is the method of the HTTP servlet class. Yesterday I told you the hierarchy also. Servlet is an interface. Generic servlet is the class which implements this behavior of the interface, and generic servlet is the protocol independent, can support with all protocols and all. And generic servlet is going to be again inherited by the HTTP servlet to just deal with the HTTP data, and HTTP servlet is inherited by our own servlet. Okay, and now do post method is going to be called this for this request. तो इतना दूर तक सबको समझ में आ गया? ये कर लिए आप लोग ये पार्ट? रेज 1 স্যার একটু প্যাকেজের জায়গাটা দেখাবেন, ওটা মিস করেছি। কোনটা বলো তো? এই যেখানে আপনি ওই সিজি ডট ওটা ক্রিয়েট করলেন, তারপরে সার্ভলেটটা ক্রিয়েট ওই জায়গাটা কি হয় আমি এ করলাম বানালাম। হ্যাঁ হ্যাঁ src/main/java নিউ রাইট ক্লিক করবে, নিউ প্যাকেজ, এখানে লিখবে cg.task.driver
সাবস্ক্রাইব হুম ওর মধ্যে একটা হ্যাঁ সার্ভলেট বানাতে হবে, নিউ আচ্ছা সার্ভলেট। ব্যাস একটু দাঁড়া এখানটা হ্যাঁ হ্যাঁ এবার বলুন এর মধ্যে একটা সার্ভলেট বানাতে হবে, যার মধ্যে প্যাকেজটা তো সেম থাকবে। দেখো প্যাকেজের হ্যাঁ নাম চলে এসেছে, আর নামটা কি দিচ্ছেন ক্লাসটা ক্লাসের নাম এটা দিয়েছি রেজ ওয়ান। রেজ, এই তো এখানে রেজ ওয়ান সার্ভলেট লাইন নাম্বার 14 এ রেজ 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 সার্ভলেট সার্ভেট নেম, রেজ ডট সার্ভলেট নেম। তুমি কিছুই নাম আচ্ছা দিতে পারো, কিন্তু রিকোয়েস্টের নামটাকে তোমাকে ঠিক রাখতে হবে। আচ্ছা এটা এটা এন্টার এটাও করার তুমি পর ওই দিতে পারো। ফরম্যাটটা দিয়ে দেবে না হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ফিনিশ হুম হ্যাঁ ফিনিশ এসে গেছে चले আসছে। হুম तो सवार हो गए, एवरीवन कंप्लीटेड, सबका हो गया ये पार्ट क्या जी? आप लोग का सबका हो गया? यस सर। अच्छा हाँ सर हो गया। जी जी, रेज वन में डू पोस्ट मेथड में चलते हैं। अब इसमें हम लोग को कोड लिखना है। क्या करना है अब कि ये दोनों इनपुट को लेना है पहले। सो रिक्वेस्ट के साथ ये दोनों इनपुट जाएगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, टेक्स्ट बॉक्स में जो भी वैल्यू देंगे। सो आंख बंद करके दोनों इनपुट के लेते हैं। फर्स्ट नेम equals to request dot get parameter text box 1 t1, okay, 2 minute। उसके बाद से string l name request dot get parameter, समझ में आ गया, कल हम लोग यूज किए थे। text box 2 t1 t2 क्या है? ये दोनों html एलिमेंट का नेम है, t1 and this is the name t2। तो इस दोनों टेक्स्ट बॉक्स से जो भी वैल्यू आएगा इसमें स्टोर हो जाएगा। अब मैं चाहता हूं मैं इस प्रोग्राम में एक्चुअली जो सागर सर का एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन यही होगा कि इस दोनों इनपुट को लेना है और इसको डिफरेंट स्कोप में बाइंड करना है। इसको कहीं ना कहीं बाइंड करेंगे हम लोग, तभी इसको रिटर्न कर पाएंगे। तो हम लोग पहले इसको कुकीज के साथ बाइंड करते हैं, करेक्ट? तो पहले कुकी के साथ बाइंड करेंगे, सेकंड में हम लोग सेशन के साथ बाइंड करेंगे, ऐसे करके करेंगे, करेक्ट ना? तो लेट मी जस्ट बाइंड दिस डेटा, ओके। सो फॉर दिस आई नीड टू क्रिएट अ कुकी। सो इधर मैं कमेंट में लिख रहा हूं कि जस्ट रीडिंग इनपुट inputs, okay, inputs from html element। उसके बाद से क्या कर रहे हैं? उसके बाद से करेंगे क्या? क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ कुकी, ओके। तो कुकी ck1 न्यू कुकी, फर्स्ट नेम के लिए यूज करते हैं, ओके। सो कुकी एंड वी कैन जस्ट create cookie। We need to import from which package? See here, javax.servlet.http package। So cookie is the part of this package। I told you yesterday one more thing also, कि for exploring entire servlet API we need these two packages, javax.servlet.http, javax.servlet package, and in the cookie is one of the class inside the javax.servlet.http, okay। So in case of this, here we are going to give the first name key, f key, and we'll store f name with that. That means what? This is the constructor of the, so cookie is the class, actually predefined class inside the Servlet API, okay। We are constructing the object of the cookie using new keyword, see, and we are just calling this constructor by passing these two parameters. One is the name of the cookie and this is the key name, key, and this is the value associated with the cookie। So पहला cookie मैं बना रहा हूँ ck1, जिसमें फोन फर्स्ट नेम को मैं बाइंड कर रहा हूँ की के अकॉर्डिंग, f key के अकॉर्डिंग। You can give any name of the key, so key should be string, value also should be string। You cannot give the integer value over here। See, suppose if I'll give here integer, right, it's giving me the error। See, the constructor cookie string int is undefined, we have to always give some string। See, error is done। So because the
cookie can only hold the textual information. Now, one more cookie I'll create for the last name also. Cookie ck2 new cookie. Okay, so L name, I say L key, I'll give L name. So I have created these two cookie objects. So স্যার yes, স্যার আরেকবার বলবেন এফ কি এল কি কাজটা? হ্যাঁ বলছি। এবার कुकी इज अ कुकी एक क्लास, कुकी एक क्लास है, राइट? और कुकी का हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। कुकी में मैं क्या लिखा हूं, इधर थोड़ा सा मैं अपना नोट्स में लिखा हूं, कुकी इज अ स्मॉल टेक्स्ट फाइल व्हिच स्टोर द टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन एज की एंड वैल्यू पेयर। ओके, तो कुकी में मैं दो वैल्यू स्टोर करूंगा, एक फर्स्ट नेम का और एक लास्ट नेम का। तो फर्स्ट नेम एक वैल्यू स्टोर किया हूं मैं, जिसको मैं एफ की से बाइंड किया हूं। तो फर्स्ट नेम का वैल्यू कुकी में बाइंड किया हूं। ओके, आई गिवन द की नेम एफ की, तो एफ की दिस इज द की नेम। ওকে স্যার, ও বুঝে গেছি স্যার। বুঝে গেছো? হ্যাঁ, জাস্ট কি ভ্যালু পেয়ার তো জাস্ট। हाँ, की वैल्यू पेयर। हाँ। सर यहाँ पे बाइंड हो रहा है क्या? ना, यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी बना रहे हैं और ऑब्जेक्ट के साथ वैल्यू सेट कर रहे हैं। जैसे हम लोग ऐसा करते हैं ना, ऐसे इसका क्लास डिफाइन है, क्लास कुकी, और इसका दो पैरामीटर हैं, दो एट्रीब्यूट है इसका, स्ट्रिंग की और स्ट्रिंग वैल्यू, है ना? ऐसे करके उसमें बनाया है और कुकी कंस्ट्रक्टर दे दिया है, जिसमें हम लोग स्ट्रिंग की पास कर रहे हैं और स्ट्रिंग वैल्यू पास कर रहे हैं। तो इसी को हम लोग कॉल कर रहे हैं और इस कुकी ऑब्जेक्ट के साथ ये ऑब्जेक्ट ये हो रहा है। देखिए, दिस डॉट की इक्वल्स टू की और दिस डॉट वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू, ऐसे करके लिखा हुआ है इसमें। तो इसी को हम लोग कॉल कर रहे हैं। देखिए, कुकी को कॉल करेंगे, की और वैल्यू को पास करेंगे, इसके ऑब्जेक्ट के साथ ये सेट हो रहा है। एक तरह से बाइंड ही बोल रहे हैं हम लोग, है ना? उसके बाद से उस कुकी का हम लोग एज फिक्स करेंगे। सो सेटिंग एज ऑफ कुकी कैसे करेंगे? ck1 डॉट set max age. This is one of the very important method which set the expiry age of the cookie in a second. Actually, you can see here the description they given. Set max age is the method name. The return type of the method is void. This method is taking integer as a parameter. Expiry date. Set the maximum age in the second for this cookie object. A positive value indicates the cookie will be expired after that many seconds have passed. जो भी हम लोग सेकंड पास करेंगे उस टाइम तक वो, मतलब यदि हम लोग 30 करेंगे तो 30 सेकंड तक कुकी अवेलेबल रहेगा, राइट? सो again, the negative value means the cookie is not stored persistently, will be deleted when the web browser exit मतलब जब भी हम लोग वेब ब्राउजर को क्लोज करेंगे तो कुकी भी बंद हो जाएगा, कुकी भी क्लोज हो जाएगा, चाहे उसका एज जितना भी आप सेट कर ले। लेकिन यदि नेगेटिव वैल्यू हो तो कुकी, इसके मतलब हम लोग कुकी जब ब्राउजर बंद करेंगे तो कुकी भी क्लोज हो जाएगा। दैट इज मींस टेम्पररी कुकी वी आर गोइंग टू क्रिएट। एंड जीरो वैल्यू कॉज द कुकी टू बी डिलीटेड, और जीरो यदि पास कर देंगे दैट मींस कुकी विल बी डीइनिशियलाइज्ड। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड एक्चुअली। सो पॉजिटिव वैल्यू we can say that we can set the age of the cookie for 300 second or 400 second. Okay, we can set the here also 60 into 4. I think it will be set for some 24 hours like that. Okay, so like that also you can set. So that the seconds you have to, but the time should be in second. Okay, so ck2 I'm setting the age of the cookie for both object. Okay, तो ये तीनों मेथड में ये इंपॉर्टेंट है कि पॉजिटिव वैल्यू सेट करेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू सेट करेंगे तो क्या होगा, और जीरो सेट करेंगे तो क्या होगा। सो दैट इज व्हाट दे रिटन ओवर हियर, यू कैन सी। सर इन केस नेगेटिव में क्या होगा सर? नेगेटिव में क्या होगा कि वैल्यू जितना भी सेट करिएगा, मान लीजिए इधर हम किए हैं -4500, राइट, लाइक दैट, तो जब भी हम ब्राउजर को क्लोज करेंगे तो कुकी भी क्लोज हो जाएगा, कुकी भी डिलीट हो जाएगा। सी नेगेटिव में देखिए लिखा है, नेगेटिव वैल्यू मींस cookie is not stored persistently, will be deleted when the web browser
exits. Understood? So setting the main सर इसका AW. मतलब ये हुआ कि कुकी नहीं बनाने के बराबर हो गया यदि हम लोग माइनस वैल्यू दे रहे हैं। माइनस नहीं बनाएंगे। कुकी आपका जो काम करेगा मतलब एक जगह से दूसरी जगह में वैल्यू फेच करेगा, लेकिन जब भी उस ब्राउजर को आप क्लोज करेंगे, जो ब्राउजर में कुकी है, तो कुकी भी डिलीट हो जाएगा। जब तक ब्राउजर नहीं क्लोज करेंगे तब तक कुकी काम अपना देते रहेगा, वैल्यू जो भी इसके साथ है यू कैन एबल टू फेच। अच्छा, समझ गया ना? और जीरो करना मतलब कुकी नहीं बनाने के बराबर। दैट मींस you are saying that cookie should be deleted from browser itself also. Understood now? So, कौन सा बैंकिंग एप्लीकेशन में कुकी का यूज नहीं होता है, सेशन का यूज ज्यादा होता है। और जहां पर कुकी का हाँ 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 ब्राउजर बंद करेंगे तो हाँ हाँ कुकी भी उसका डिलीट हो जाना चाहिए। हाँ, तब सिक्योर होता है। और क्या है कि लॉग आउट भी यदि हम कर देंगे ना, लॉग आउट बटन भी रहता है। लॉग आउट बटन करके क्या करते हैं कि उस कुकी को फेच कर लेते हैं और उसको 0 से सेट कर देते हैं। 0 समझ गए ना? अच्छा सर, कोई फॉर्म का वैलिडेशन अगर जैसे 24 घंटा दिया हुआ है तो वो इसी तरह सेट किया रहता है क्या? फॉर्म का वैलिडेशन 24 आवर्स दिया रहता है, राइट? हाँ हाँ हाँ, तो मतलब वो इसी तरह सेट रहता है क्या कुकी? इस तरह भी सेट होता है आपका। इसके साथ भी मतलब उसमें हम लोग लॉजिकली भी जावास्क्रिप्ट से भी सेट कर सकते हैं, टाइमर से यूज करके। सेट टाइम आउट मेथड है जावास्क्रिप्ट में उसे। और रिमेम्बर मी बोल के आप रिमेम्बर मी बोल के एक है ना, हम लोग का यूज करते हैं लॉगिन में। रिमेम्बर मी का फंक्शनैलिटी जो चेक बॉक्स में हम लोग रिमेम्बर मी को चेक करते हैं तो इट्स गोइंग टू जस्ट ऑटो फिल योर ऑल इंफॉर्मेशन। वो भी हम लोग कुकी से हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि कुकी का मेन मकसद क्या है कि कुकी क्या है कि क्लाइंट के सर्वर के साथ बना रहे हैं और उसको वैल्यूज पे सेट कर रहे हैं, जैसे एफ नेम और एल नेम वैल्यू बाइंड कर रहे हैं। करने के बाद उसका एज सेट कर रहे हैं और उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रेस्पॉन्स हेडर के साथ उसको हम लोग क्लाइंट के पास भेज देते हैं। और क्लाइंट से जब भी फिर रिक्वेस्ट करते हैं तो along with the request, along with the body of the request, cookies information, ये दोनों information फिर से हमको मिल जाएगा। and we can able to fetch the cookies information. I'll show you how to fetch that. request.get cookies बोल के एक मेथड है, तो उससे हम लोग सेशन ट्रैक करने के लिए कुकी बनाया गया है, राइट? कि वी कैन एबल टू ट्रैक द सेशन एंड ऑल। तो रिमेंबर मी में क्या होता है कि हम लोग यदि मतलब लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन किए, फिर सर्वर के पास भेजे, फिर सर्वर इज गोइंग टू फॉरगेट अबाउट इट्स क्लाइंट, तो हम लोग क्या करते हैं कि जस्ट अगेन वी आर ऑटो फिलिंग द सेम यूजर नेम पासवर्ड एंड अगेन वी आर क्लिकिंग द बटन रिमेंबर मी। देखिएगा रिमेंबर मी बोल के एक फंक्शनलिटी हम लोग ये करते हैं, आपका कोई एप्लीकेशंस में रहता है। तो कुकी का मेन काम है कि we are going to track the session with the minimum amount of data, set the cookie object with response header. So response dot add cookie 1, response dot add cookie 2. So I have just added this both cookie objects, cookie 1 and cookie 2. This two I have added. This maximum age I have set, and then I'm going to add this both cookie object with the response header. तो ये चला जाएगा आपका ये response object किसका है? ये response object है आपका HTTP servlet response interface का। इसका नाम क्या है? Response. तो we can just use the response dot add cookie 1, दोनों कुकी ऑब्जेक्ट को देखिए हम बाइंड कर दिए। तो add cookie is the method of the HTTP servlet response, जिसका रिटर्न टाइप है void, मेथड नेम है add cookie, it's going to take cookie object as a parameter. Okay, so the method is the HTTP servlet response. ये हो गया। तो हम लोग कुकी को बाइंड कर दिए।
करके हम लोग इसको करेंगे क्या, नेक्स्ट पेज में भेज देंगे। तो नेक्स्ट पेज में भेजने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज the can say request dispatcher, PATCHER। रिक्वेस्ट डिस्पैचर एक तरह का जस्ट एक्ट एज ए कोरियर सर्विस। एक्चुअली ये क्या करता है कि जो भी करंट रिक्वेस्ट है उसको नेक्स्ट रिसोर्स में जहां पर आपको जाना चाहिए, आपको जाना है, इट्स गोइंग टू डिस्पैच योर रिक्वेस्ट। सो इसका ये प्रोग्रामेटिकली दिस इज एन इंटरफेस, रिक्वेस्ट डिस्पैचर। लेट मी जस्ट राइट ओवर हियर। सो अबाउट द रिक्वेस्ट डिस्पैचर, request dispatcher is an interface which resides inside javax.servlet package. Okay, request dispatcher provides two methods. One is forward, okay, which taking http servlet request, जो भी request object, okay, and http servlet response object. These two parameter we have to pass, okay. और एक और मेथड है इसका, that is name is include। forward एक है और include एक है। 2 minutes, just I'm writing over here। So include method, 2 minutes, let me just break it this part, break it this part. This is one and this is second method is include method, okay. So include method, okay। Now ये forward method क्या करेगा, it will just pass the current request to the next resource, दूसरा resource can be HTML, Servlet, JSP also, okay। include क्या करेगा, it will right include the response, current response also। So it will first it will pass the request to the next resource and it will also include the response of the first resource। इसका एक बार दिखाते हैं आपको कि कैसे इसका इधर प्रोग्रामेटिकली दिखाते हैं। रिक्वेस्ट डिस्पैचर का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, कैसे ऑब्जेक्ट बनेगा, तो बाय यूजिंग रिक्वेस्ट डॉट देयर इज अ मेथड कॉल्ड गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर। सो http सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस का एक मेथड है गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर। सो http सर्वलेट रिक्वेस्ट क्या है, दिस इज एन इंटरफेस एंड दिस ऑब्जेक्ट वी आर यूजिंग रिक्वेस्ट डॉट क्या यूज किए हम इधर, get request dispatcher। get request dispatcher will return what, it will return what, object of request dispatcher। और इसमें हम लोग क्या डिस्पैच करेंगे, इसका नाम है रिक्वेस्ट डिस्पैचर, मतलब ये बस रिक्वेस्ट को, करंट रिक्वेस्ट को डिस्पैच करेगा नेक्स्ट रिसोर्स में, ओके। तो मैं क्या करूंगा इधर, सो आई वांट टू डिस्पैच दिस रिक्वेस्ट टू द second input dot html page, sorry, second input, yes, suppose we can say dot JSP page also you can write, okay। So because we are going to create now one JSP page also, I'll show you second input dot JSP page, okay। or we can just say second input JSP page एक दूसरा के लिए बनाएंगे, इसके लिए थोड़ा सा कुकी यूज करेंगे ना, तो second input dot html, okay। so next रिसोर्स में भेजेंगे और इसमें करेंगे rd डॉट फॉरवर्ड, सॉरी फॉरवर्ड नहीं, इंक्लूड का दिखाते हैं कि इंक्लूड में क्या होता है। सी इंक्लूड मेथड टेकिंग टू पैरामीटर, वन इज द रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट एंड वन इज द रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, यू कैन सी। तो रिक्वेस्ट कॉमा रेस्पॉन्स, ओके। तो ये मेरा हो गया रिक्वेस्ट कॉमा रेस्पॉन्स, और इधर मैं जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में इनपुट किया था उसको एक बार प्रिंट कर देता हूँ, इधर ही प्रिंट करता हूँ। तो इसका भी, इस सर्वलेट का भी कुछ रेस्पॉन्स होगा,
तो प्रिंट करने के लिए कल मैं क्या बोला कि आई नीड अ प्रिंट राइटर ऑब्जेक्ट। सो रेस्पॉन्स डॉट, कल ये पार्ट मैंने किया था इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी थोड़ा लिख रहा हूँ। प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट में बना रहा हूँ बाय यूजिंग द गेट राइटर एंड pw डॉट प्रिंट, आई विल से फर्स्ट नेम, इसमें भी मैं HTML ऐड करूंगा, header 2 font color color blue, okay, blue, okay, and I'll say that f name and I'll say that l name, फर्स्ट नेम लास्ट नेम मैं शो करा रहा हूं इधर, ओके, डिस्प्ले करा रहा हूं h2 और फॉन्ट क्लोज कर दिया मैंने। अच्छा, so that I have did over here, so this is what I did. So it will go to the second input.html page. second input.html एक पेज बना लेते हैं। तो let me just save this file. इतना दूर तक आप लोग भी थोड़ा सा कर लीजिए, इसमें थोड़ा सा कर लीजिए, तब मैं इसमें थोड़ा सा कुछ लिखना है। इतना दूर तक सबका हो गया, ये पार्ट तक, ऐड तक, लाइन नंबर 73 तक। सो मेरा हो गया सर। हो गया यस ना? सर मेरे अच्छा, একটু अब দেখুন এটা প্রিন্টটা। হ্যাঁ क्या প্রিন্টটা একটু লিখবো। হ্যাঁ এটা একটা লিখেন, এটা একটু লিখেন, pw ডট প্রিন্ট আর রিকোয়েস্ট ডিসপ্যাচারের এই অবজেক্টটা বানিয়েছি, dispatching the request to the next resource. Is this just act as a courier service with just giving the address कहां पर मुझे डिस्पैच करना है, तो इस पेज में इसको रिडायरेक्ट कर देगा। करने के बाद अब ये इंक्लूड का देखिए, इंक्लूड यूज करेंगे तो क्या होगा कि जो मैं इधर प्रिंट कर रहा हूं वो भी इसके साथ इंक्लूड होगा, मतलब द रिस्पांस ऑफ दिस फर्स्ट सर्वलेट विल बी इंक्लूडेड विद द नेक्स्ट रिसोर्स। दैट इज व्हाट इंक्लूड मेथड इज डूइंग। तो एक बार आउटपुट इसका देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्या कर रहा है। तो इतना दूर तक एक बार आउटपुट करके देखेंगे। डन फॉर एवरीवन? कौन सा जी? ये वाला, हाँ, फॉन्ट पहले क्लोज होगा जी, फॉन्ट पहले, उसके बाद से header 2 please close this line same because font पहले होगा तब इसके बाद ये होगा। और थोड़ा सा और करने के लिए इसको सेंटर भी कर सकते हैं, थोड़ा सा इसी में सेंटर करेंगे तो बीच में फर्स्ट नेम लास्ट नेम शो करेगा। yes. Done for everyone? अच्छा, नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, रजिस्ट्रेशन सर्वलेट मेरा हो गया, तो डन सर। डन, ओके ओके। नाउ आई क्रिएट वन मोर। 2 মিনিট দাঁড়ান না স্যার। एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ जी, हाँ जी। সো এটা ইয়ে এন্টার মেরে দিন না একবার মাঝে, তাহলে লিখতে সুবিধা হবে। কোনটা এইটা? আচ্ছা, প্রিন্টটা ঠিক আছে তো। হ্যাঁ, आज ना थोड़ा सा मैं एक बजे के पहले ही छोड़ूंगा, मुझे आज काकद्वीप में हूँ, मैं मुझे कलकत्ता जाना है, तभी मैं कल आप लोग का क्लास में ऑन टाइम आ पाऊंगा। तो यहाँ से लगता है 3-4 आवर्स, तो मैं बस से जाऊंगा एक्चुअली, तो टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं आज 12 बजे तक लूंगा। कल जो भी पेंडिंग रहेगा कल मैं इसको कंप्लीट कर देंगे आके क्लास में कल 9:30 से 10:30 तक आके वो कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना? ओके सर, डन। डन फॉर एवरीवन? नो सर। यस सर। हाँ, फटफट लिख लीजिए। ग्रुप में सेंड किए हैं, देख ले, कॉपी कर ले वहां से। हाँ, ग्रुप से कॉपी कर लीजिए, वो अजीज सेंड किए हैं शायद। चल आई गो फॉर द नेक्स्ट। तो एक बार चलते हैं नेक्स्ट में, एटलीस्ट ये 2 पार्ट मैं कर लेता हूँ, एक पार्ट आप लोग ट्राई करिएगा। तो मैं जाता हूँ सेकेंड input.html में, वेब ऐप में,
second input.html बनाता हूँ. New HTML file SECOND second input.html. इसमें भी BG कलर, स्काई ब्लू और कुछ भी रेड कलर ले लेते हैं इसमें, थोड़ा सा रेड, और लेके इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं. खाली बस नाम चेंज कर देंगे. आप लोग भी कॉपी पेस्ट करिए, अदरवाइज इट विल टेक मोर टाइम. ओके, सो बॉडी के पार्ट कॉपी पेस्ट करना है. लेबल में बस अब इधर फोन नंबर दे देंगे, फोन नंबर, और ये रेज 2 कर देंगे रिक्वेस्ट का नाम. ये फॉर्म को थोड़ा सा हम लोग बाइंड कर देंगे, ऐसा टैग दे देंगे. उसके बाद से इसका टेक्स्ट 1, इसका नाम देते हैं फोन th, और इसका देते हैं हम लोग फोन नंबर था और क्या था, एड्रेस करते हैं, और इसको add एड्रेस करते हैं, इसको एड्रेस. और एड्रेस के लिए हम लोग टेक्स्ट एरिया का यूज भी कर सकते थे. यू हैव यू नो अबाउट द टेक्स्ट एरिया इन HTML टैग. टेक्स्ट एरिया, you can see rows 5, columns 5, and name we can give, suppose address, ADDRI even. Okay, here also I'm giving the submit button, here also I'm giving the value equals to save. Rage 2 is the request name, red color is this, make it as a center. Okay, and this also we have to make as in the center position. So everyone please complete this part also. So the second input, that means we are here actually as per our expectation. So display the first name, last name will be displayed. Along with that, this form will be shown. Along with that, this button should be placed. Once the button placed, then this input should open. So पहले इसको कर लेते हैं, तो इसको पहले complete कर लीजिए आप लोग. Completed, just complete everyone. Copy paste करिएगा, बस यूजर नेम की जगह फोन नंबर और इसकी जगह ये चेक करना है बस, और एड्रेस, और इधर टेक्स्ट एरिया मैं यूज किया हूँ बस, थोड़ा सा ज्यादा नहीं. जी, just check in the teams everyone. Sandeep shared actually in that, so वहां से कॉपी पेस्ट कर लीजिए आप लोग. Let me go to the next then. Let me create. सबका हो गया, थोड़ा सा just raise your hand everyone. Everyone completed. ग्रुप में सेंड कर दिए सर, जिसका नहीं हुआ वहां से कॉपी कर लेगा सर. आप कंटिन्यू कीजिए सर. यहाँ पर एड्रेस का टाइप नहीं होगा क्या इसमें? एड्रेस टाइप, एड्रेस का एड्रेस टाइप इनपुट टाइप इक्वल्स टू एड्रेस बोल रहे हैं. हाँ हाँ, वो भी कर सकते हैं. हाँ, इनपुट टाइप एड्रेस में, हाँ हाँ, वो भी हो सकता है. This he is saying that this one input type equals to address, right? यही ना? सर यस सर, ये भी कर सकते हैं. और टेक्स्ट एरिया थोड़ा सा बिग टेक्स्ट बॉक्स will come. Okay. Next, we are going to create one more servlet inside the same package, cg.task.driver package. We are going to create one more servlet called Rage Servlet 2.
this, then this. Here we'll give rage2. Okay, rage2. And here I given the method name post. See, इसमें क्या किया हूं मैं, इस second input का request का नाम क्या है, rage2. That is the reason in the web servlet annotation request mapping name I given rage2. Then this is going to be executed. Okay, so now I'm going to write the inside the do post method. Do post method में भी हम लोग क्या करेंगे कि we just fetch the phone number, string phone number equals to request dot get parameter phone ph. So you can see here in the second input dot html file I used ph over here. In the address part I used addr, so here I have to use ph, and here I'll say string address addr request dot get parameter addr. Okay, so this address also I have fetched. Now अब इसको हम लोग सब सोच रहे हैं कि बाइंड करेंगे दिस फोन नंबर एड्रेस को सेशन ऑब्जेक्ट के साथ. सो बिकॉज फर्स्ट सर्वलेट आई हैव बाइंडेड दिस इंफॉर्मेशन with the cookie object. See, this everyone understood. Now second I'm going to bind with cookie session object. See here we have the one more session tracking mechanism I told. This is very very important, called session. Session में क्या है कि session is a time period, right? So everything is a time period, right? So session is time period, and with this limited time I can hold the object. Okay, so in Servlet API they introduce one interface called HTTP session. Okay, so session created at the server side, session created created at server side. Okay, and number 3, it can allow to store large amount of data. That means any object we can store with session. Session is secure, then cookie, because it's not interacting with client. Okay, it's stored at the server side only. Okay, सर कुकी तो क्लाइंट साइट पे बनता था ना. ना कुकी सर्वर में बनाया है ना हम लोग, सर्वलेट में बनाया है ना, तो सर्वर साइड पे कुकी बनता है, क्लाइंट पे स्टोर होता है. अच्छा जी. Okay, so interacting with the client. So now let me just create a session. तो session कैसे बनेगा? So in case of how to create a HTTP session, not create actually, क्योंकि सब कुछ created है, just we need to get that. Okay, how to get the session object? So HTTP session equals to request having one method called get session. See here, get session. Okay, so get session I'm giving true. So true it will pass this taking this boolean value actually. True if I'll pass, every time it's going to create a new session object. Okay, so HTTP session I'm going to import from the javax.servlet.http package. Okay, so this is the one of the interface or member of this package, HTTP package actually. Okay, so I have created a session object here. Okay, and with this session object, okay, so session dot, we can say set attribute. There is a one method I'm going to bind the, let me just write the comment here, binding data with session object. मैं array list भी bind कर सकता हूँ, list भी bind कर सकता हूँ. Let me create one array list here.
array list of string, okay, and al equals to new array list. Okay, so I'm going to bind this array list. So array list I'm going to import from the, see here, this package. So al dot add, we can say the phone number we can add. Okay, al dot add, we can add the address also, we can able to add, and that array list object also we can able to bind here with the key name. I can give the key name anything, session key I can give. Okay, so here binding array list object with session object, okay, by the key name called session key के साथ हम लोग इसको बाइंड किए हैं. Has everyone understood this part till this part? सर ये सेशन की जो है ये क्या है? सेशन की है एक, जैसे हम लोग कुकी में बाइंड कर रहे थे. देखिए कुकी में बाइंड कर रहे थे की और वैल्यू के अकॉर्डिंग. की एफ की क्या था, की नेम था. यस सर. और इसके साथ ये वैल्यू है जो भी हमको फेच करना है, वैल्यू जो मुझे वैल्यू चाहिए. सेम थिंग इधर भी की नेम है. मुझे इसको मान लीजिए आपका लास्ट सर्वर सर्वलेट से यदि फेच करना है इस एरे लिस्ट को, तो कैसे फेच करेंगे? इस की के अकॉर्डिंग फेच कर सकते हैं. ये की आपका इसका जैसे रोल नंबर के अकॉर्डिंग हम लोग स्टूडेंट को फेच करते हैं, वैसे इस की क्या है, मतलब ये सेशन की मतलब कि एक नाम है आइडेंटिफायर है, प्राइमरी की टाइप का है. इसी से हम लोग इसको फेच करेंगे. यूनिक की है. सर ये ट्रू क्या था वैसे? ट्रू करेंगे. देखिए इसमें इस सेशन के लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज कर रहे थे? गेट सेशन मेथड का रिटर्न टाइप क्या था? http सेशन रिटर्न टाइप का मेथड का नाम है गेट सेशन. मेथड इज टेकिंग बुलियन. दो मेथड है इसका, बुलियन वैल्यू एज ए पैरामीटर, और एक और मेथड है उसमें बस कोई पैरामीटर नहीं पास करते हैं. बाय डिफॉल्ट ये इसमें कुछ वैल्यू पास नहीं करते. कुछ वैल्यू नहीं पास करते तो हमेशा ये नया सेशन ऑब्जेक्ट बना के देगा. तो यू कैन आल्सो राइट दिस मेथड आल्सो. और यदि ट्रू करेंगे तो ये हमेशा नया सेशन ऑब्जेक्ट बना के देगा, और यदि फॉल्स करेंगे तो ओल्ड सेशन ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा. मान लीजिए मुझे जब फेच करना है इस वैल्यू को, तो मैं तो नया सेशन बनाया हुआ नहीं, मुझे तो इसी सेशन ऑब्जेक्ट से ये डेटा चाहिए. तो दैट टाइम आई गेट द ऑब्जेक्ट बाय जस्ट पासिंग द फॉल्स. दैट टाइम व्हाट विल हैपन, जो भी इसके पास सेशन ऑब्जेक्ट बना हुआ है उसको रिटर्न करके देगा. लेकिन अभी मुझे ट्रू करना है क्योंकि मुझे न्यू सेशन बनाना है और उस सेशन के साथ ये ऑब्जेक्ट को सेट करना है, बाइंड करना है. तो बाय डिफॉल्ट ये नया ऑब्जेक्ट बनाएगा. ऐसे भी लिख सकते हैं, करेक्ट ना? तो उसके बाद से हम लोग भेज देंगे रिक्वेस्ट डिस्पैचर rd इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर. कहां पर भेज देंगे इसको? मान लीजिए थर्ड इनपुट डॉट html के पास भेज देंगे. थर्ड इनपुट third इनपुट डॉट html के पास इसको भेजना है. थर्ड इनपुट के पास भेजना है. ओके, थर्ड इनपुट डॉट html के पास इसको भेज देंगे और करेंगे कि rd डॉट फॉरवर्ड. इसमें कुछ प्रिंट हमको करना नहीं है, बस भेजना है रिक्वेस्ट कॉमा रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट. सर ये रिक्वेस्ट डिस्पैचर क्या कर रहा है? राउटिंग कर रहा है, यही क्या? हाँ, राउटिंग कर रहा है, मतलब यस एग्जैक्टली. तो हम लोग का ये यहाँ से क्लिक करेंगे ये क्या करेगा कि इस रिक्वेस्ट को, जो रिक्वेस्ट है करंट रिक्वेस्ट है, उसको इस पेज इस रिसोर्स के पास वो भेज देगा. मतलब ये एग्जीक्यूट, जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगा और ये फॉरवर्ड एग्जीक्यूट होगा तो ये चला जाएगा आपका इस HTML पेज के पास. एक बार मैं आपको इतना दूर तक थर्ड इनपुट डॉट HTML बना के मैं आप लोग को एक बार रन करके दिखाता हूँ. लेकिन एक पेज बना लेता हूँ मैं, नहीं तो 404 का एरर आएगा. थर्ड इनपुट डॉट HTML third थर्ड इनपुट डॉट HTML. अभी हम इधर हाई लिख रहे हैं, इसमें हम कुछ वैल्यू देंगे बाद में.
अभी हाई लिख रहे हैं, ठीक है। मैं अब इसको रन करता हूँ, फर्स्ट इनपुट डॉट एचटीएमएल से रन करता हूँ। तो रन स्टार्ट, रन एज, रन ऑन सर्वर, okay, next, और यदि हम लोग बेसिक वैलिडेशन वही जो बोल रहे थे ना, हम लोग इससे भी कर सकते हैं, HTML से भी कर सकते हैं। मैं वो करके दे देता हूँ, तो बेसिक वैलिडेशन भी हो जाएगा। एक फर्स्ट नेम करेंगे सपोज GOPAL और लास्ट नेम करेंगे UPADHYAY पाथ है। तो सेव करेंगे तो देखिए ये आ गया, देखिए सेंटर में गया, फॉन्ट अब ये पूरा HTML कोड दे दिया, करेक्ट। लेकिन मुझे HTML कोड नहीं प्रिंट करना है, मुझे प्रिंट करना है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और ये पेज आना चाहिए, ये HTML पेज आना चाहिए, राइट। HTML का वो डिस्प्ले आना चाहिए, लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। इसके लिए क्या चाहिए हमको, एक चीज और इसमें करना है। किसमें, रेज सर्वलेट 1 में एक लाइन और लिखना है। क्या लाइन लिखना है, इसमें लिखना है कि रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप, इसके अंदर पास करना है टेक्स्ट स्लैश HTML। देखिए ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब ये रिस्पॉन्स जब ये ब्राउजर ये सर्वर क्या सर करेगा, आपका स्क्रीन फ्रीज हो गया है। फ्रीज हो गया है। हमको नहीं नहीं, दिख तेरा ना नेटवर्क सर इशू, मेरा सही तो है, सही चल रहा है। सही है, मेरा सही भी है। सही। सही है ना। तो ये देखिए इधर देखिए HTML कोड जनरेट करके दे रहा है, लेकिन हमको HTML नहीं चाहिए, कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए ब्राउजर में। तो सर्वर क्या करता है कि रेस्पॉन्स जनरेट करता है, लेकिन सर्वर को मैं बता रहा हूं कि जो आप रेस्पॉन्स जनरेट करेंगे, दैट रेस्पॉन्स इज कंबाइनिंग दिस माइन टाइप इंफॉर्मेशन, दिस text also will be there and HTML code document also will be there, please execute that। तो ये लाइन जब हम ऐड कर देंगे तब ये मेरा पूरा फॉर्मेट बदल जाएगा। ये दोनों सर्वलेट में मैं ये लाइन ऐड कर देता हूँ, देखिए, और इसके बाद फिर से मैं इस पे एग्जीक्यूट करता हूँ, करके इसको यहाँ से एग्जीक्यूट करता हूँ, ये सेव। एक मिनट, इसको फिर से एक बार शायद रन करना पड़ेगा, एक बार रन कर देता हूँ मैं, नहीं होगा तो फिर क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि ये सेव नहीं था, ये RG सर्वलेट सेव नहीं है। सेव नहीं क्यों हो रहा है, सेव ऑल। फिर से मैं रन करता हूँ एक बार। सिलेक्ट दिस टॉमकैट ऑन विच यू आर रनिंग, restart server once again, first name last name I'm giving this, save। you can see गोपाल उपाध्याय, फोन नंबर का आ गया इधर पार्ट, और इधर आ गया आपका कोलकाता सेव। ये टेक्स्ट एरिया है, टेक्स्ट एरिया को थोड़ा सा और वाइड कर सकते हैं हम लोग, और नीचे बटन होना चाहिए। सेव करेंगे तो ये हाई में चला गया, मतलब इधर भी हम लोग इसको थर्ड इनपुट ले सकते हैं, लेके अब फोर्थ में सर्वलेट में पूरा डिस्प्ले करा देना है। यही हम लोग का रिक्वायरमेंट था। तो टिल दिस पार्ट एवरीवन अंडरस्टूड। सी फर्स्ट नेम लास्ट नेम सेंडिंग, इट्स सी क्या कर रहा है ये सर्वलेट, ये सर्वलेट क्या कर रहा है, रजिस्ट्रेशन 1 सर्वलेट ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को प्रिंट कर रहा है। देखिए सेंटर में फॉन्ट कलर ब्लू में ये प्रिंट हो रहा है, देखिए प्रिंट कर रहा है। और इसको नेक्स्ट लाइन से ये रिक्वेस्ट डिस्पैचर क्या कर रहा है, इसको ये सेकंड इनपुट के पास भेज रहा है इधर, इसलिए ये एग्जीक्यूट हो रहा है। सो इट इज आल्सो एग्जीक्यूटिंग, दिस टू फील्ड्स आर एग्जीक्यूटिंग एंड सेव क्लिक करेंगे तो ये लेके जा रहा है आपको इसके पास, ये रजिस्ट्रेशन 2 के पास लेके जा रहा है, और रजिस्ट्रेशन 2 किसके पास भेज रहा है, थर्ड इनपुट के पास। थर्ड इनपुट में मैं क्या लिखा हूं, अभी बस फिलहाल के लिए मैं हाई लिखा हूं, तो ये हाई प्रिंट कर रहा है। तो इतना दूर तक सबको समझ में आया जी? স্যার একবার দেখান না ওই কি চেঞ্জ করলেন ওইখানটাতে। হ্যাঁ, এই রেজ 1 সার্ভলেটে আমি এই লাইনটা লিখলাম 101 নম্বর লাইন, রেজ রেসপন্স ডট সেট কন্টেন্ট টাইপ। হ্যাঁ ওইটা লিখলাম, আর কি চেঞ্জ করলেন? আর কিছু চেঞ্জ করিনি। আর রেজিস্ট্রেশন 2 সার্ভলেটে এইটা রেজিস্ট্রেশন 1 রেসপন্স ডট সেট কন্টেন্ট টাইপ, এইটা
এটাও লিখেছো? দুটো সার্ভলেটে এই দুটো লাইন অ্যাড করে এই লাইনটা অ্যাড করে দিতে হবে। আর এগুলো তো বানিয়ে নিয়েছো ना, थर्ड इनपुट। सर वो थर्ड पेज नहीं आ रहा है? रिक्वेस्ट वन दिखाइए। रिक्वेस्ट रजिस्ट्रेशन सर्वलेट 1 बोल हाँ रहे हैं? हाँ हाँ इसको ये मैक्सिमाइज कर रहा हूँ मैं। ये मेरा आ रहा है सर थर्ड पेज। हाय हाँ हाँ ये आएगा। রান কোথা থেকে করব? ফার্স্ট ইনপুট ডট এইচটিএমএল থেকে রান করতে হবে। এখান থেকে এখান থেকে এইটা, এখান থেকে এইটা, এখান থেকে এইটা, এইভাবে মুভ করবে, নেভিগেট করবে। এখন मेन क्या करना है, मुझे लास्ट वाला सर्वलेट पे सारे इंफॉर्मेशन प्रिंट करना है। স্যার আমার থার্ড পেজটা আসছে না। আসছে না? তুমি থার্ড একটা পেজটা একবার দেখাবেন? থার্ড ইনপুট ডট এইচটিএমএল এইটা এই আপনি হাই লিখেছিলেন না? হ্যাঁ হাই লিখেছি। ও আচ্ছা আচ্ছা, এই আমাকে তো এটা লিখতে হবে। হ্যাঁ আমি জাস্ট হাই লিখে বুঝে। ব্ল্যাঙ্ক লিখলে ব্ল্যাঙ্ক আসবে, হাই লিখেছো হ্যাঁ হ্যাঁ ওই জন্য না কিছু না লিখলে তো বলছে এইচটিটিপি হ্যাঁ স্যার এরর আসছে। দিয়ে। আসছে তো? হয়েছে সবার? कौन सा बोलिए, सर्वलेट वाला कौन सा, ये रजिस्ट्रेशन 1 2 अच्छा अच्छा। इसमें हम लोग कुछ प्रिंट नहीं कर रहे हैं। आप बोल रहे थे कि एक्सपेक्टेशन के अनुसार लास्ट सर्वलेट में सब कुछ प्रिंट होगा ना? हाँ थर्ड पे ट्रांसफर बस कर रहे हैं। तो ये स्पेलिंग सही है, थर्ड इनपुट डॉट एचटीएमएल, और जो आप एचटीएमएल पेज बनाए हैं वो भी सही है। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। दोनों जो पेज आप बनाए हैं या जो एड्रेस आप दिए हैं, मान लीजिए हम इधर कलकत्ता दिए और इधर हम दिल्ली का दिए, तो ये नहीं आएगा। तो इधर हमको करना पड़ेगा कलकत्ता डॉट एचटीएमएल, इधर भी कोलकाता डॉट एचटीएमएल। স্যার হ্যাঁ মানে যদি সবকটা ইনফরমেশন যদি আমরা থার্ড পেজটাতে প্রিন্ট করতে চাই, তাহলে ওই সার্ভলেট যেটা রেজ সার্ভলেট 2 যেটা ছিল ওটার মধ্যে প্রিন্ট রাইটার দিয়ে করতে হবে তো? হ্যাঁ হ্যাঁ রেজ যদি সবকিছু রেজ হ্যাঁ 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 প্রিন্ট আইডি দিয়ে করতে হবে, কিন্তু তোমাকে ফেচ করতে হবে কুকি থেকে ইনফরমেশন গুলো, কারণ কি কুকির মধ্যে বাইন্ড করেছি ফার্স্ট ইনফরমেশন গুলো। তো এই জন্য এবার আমি দেখাচ্ছি এখান থেকে থার্ড ইনপুট থেকে, কারণ ওরাই বলেছে এই এক্সপেকটেশন অনুসারে। তো এখানে হ্যাঁ আমি হ্যাঁ হ্যাঁ ওটাই। পিজি কালার সাপোজ পিঙ্ক করে দিলাম, লেভেল ফর করলাম কি, लेवल फॉर कर रहे हैं क्या कि पैन नंबर सपोज एंटर पैन, एखान থেকে कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, वो बेटर रहेगा। और ये रेज 3 कर देते हैं और इधर ई पैन कर देते हैं और इधर पैन नंबर और इधर P1। अच्छा इधर पैटर्न बोल के एक एट्रीब्यूट है HTML5 वर्जन में, इसमें हम लोग पैटर्न दे सकते हैं कि जैसे वजीर बोल रहे थे वैलिडेशन, तो इधर दे सकते हैं कि मेरा पैन नंबर शुड टेक पैन नंबर में क्या होता है, फर्स्ट 5 कैरेक्टर शुड बी अल्फाबेट A to Z, क्या अपर केस अल्फाबेट, ओके। नेक्स्ट 4 characters should be digits and last character should be uppercase any alphabet। ये पैटर्न दे दिए। किसका पैटर्न दिए हैं हम लोग, पैन कार्ड का। फिर इधर
आधार नंबर दे दिए, सपोज आधार नंबर में इधर दे दिए आधार, ओके, और इधर दे दिए इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप टेक्स्ट, input type equals to text, name equals to आधार, ADH ब्रेक। आधार कार्ड का क्या फॉर्मेट होता है? तो आधार कार्ड का क्या होता है? डिजिट होता है ना सब, 12 की हाँ सर 14 12 डिजिट नहीं 12 डिजिट, 12 डिजिट 12 डिजिट। तो 0 to 9 लेना चाहिए 12 डिजिट का, तब हम कहेंगे सेव। और इसको हम बताएं जस्ट I'll keep in a center position. This I'll keep in a center. I'll form entire form. I'll take in a center. So this is what I have done. So raise servlet, third input में ये आ जाएगा आपका। Once I'll click this thing over here. So let me just from here I'll give this save पैन नंबर। पैन नंबर को सेव करने जाएंगे तो ये सेव नहीं होगा, राइट, ये इधर जा रहा है, ये नहीं कर रहा है। रुके, तो रेस 3 पोस्ट पैटर्न लगाए हैं, पैटर्न क्लोज्ड, इनपुट टाइप दिस, इनपुट टाइप सबमिट, चालू सेव, नेम ये टेक्स्ट पैटर्न, पैटर्न एवरीथिंग इज फाइन। एक बार रन कराएंगे पहले से, मैं थर्ड इनपुट लिख लेते हैं, स्टेशन 3, इसको कॉपी कर लीजिए। हो गया सबका? ये वाला पेज हो गया सबका? नहीं सर, স্যার আমার তো ওটা শো করছে না, পেজ 2টা। अच्छा अच्छा, गौरव तुम्हार না না, वो एक जन लिख के टीम्स में भेजना। আরে আমার তো হচ্ছে না, আমার তো হয়ে যাক তারপর তো সেন্ড করব। কোনটা বলো, আমি করে দিচ্ছি। স্ক্রিনটা শেয়ার করব একটু? হ্যাঁ, স্ক্রিনটা করো। চলো আমি আমার স্ক্রিনটা তাহলে স্টপ করছি। Done everyone this part till this part? So Yes, we are now here in this page, reach this page, okay? Now I'm going to create one more servlet and the request mapping with rage 3. So I'm going to create one more servlet, rage servlet 3, rage servlet 3, okay? Next things and complete, done this part, and here I will say raise 3. Raise 3 is what? Raise 3, this mapping should not be wrong. This is raise 3 and here also I'm giving registration 3, okay? So this, and here we have the again do post method. So here I'm going to fetch string pan equals to request dot get parameter, pan number what I given, P1, Aadhaar P1. number ADH, yes. So I'll give here P1 and string Aadhaar equals to request dot get parameter ADH, okay? And we'll create a print writer object because so many things you need to print. Writer we can give any name we can give, and how to get the object, response dot get writer to get the object of writer. So let me write getting the object of writer, print writer. So print writer, W capital, here W capital and here P capital, okay? Reading all inputs
from HTML element, a document or whatever with this object. Okay, now string string. Okay, now I need to print first name last name also. Okay, but first name last name is associated with the cookie, so I have to read that cookie also. So reading cookie info. How? So now in HTTP servlet response object, in HTTP servlet response interface, there is one more method is there called get cookies. Get cookies. The return type of the get cookies method is cookie array, because मान लीजिए मेरा in the first servlet, what we did, we have created two cookie object. Obviously this two cookie object I have added with the response header, so along with the response it's going to store at the client end, right, this two cookie. So if I want to, and what I told, along with the request these two cookies are coming to the particular server side, and if I want to fetch those cookies, I can call the request.getCookies method. So get cookies is the method of which interface? HTTP servlet request interface. तो मैं क्या करूंगा, cookie of array CKS equal to request dot get cookies. You can see here, this is the method we are going to use. Cookies, a return type is the cookie of array, cookie array object. Okay, returns an array of containing all the cookie objects that client sent with the request. This method returns null if no cookie were sent. Okay, so this I'm going to use. Cookie I'm going to import from the javax.servlet package. Don't import this cookie from the org.apache. Import the cookie from the javax.servlet.http. Okay, now here I'll say string first name equals to null, I'm initializing. String last name equals to null, I'm initializing. Okay, and I'll say for loop one cookie object ck from cookies array, I'm going to fetch. Okay, so this is simple for loop I'm using. See, cookie having one more method called get name of the cookie, that is the key name of the cookie. So this will return the key name of the cookie. String key name. Okay, and now if key name dot equals, key name is equals, what is the key name I have said? F key, right? F key is the key name. So equals F key, here I'm writing F key, then first name initialize with the ck dot get value. तो this setter method भी है, getter method भी है. Get name से हम लोग क्या कर रहे हैं, कुकी के एसोसिएटेड. तो इस कुकी एरे में दो कुकी ऑब्जेक्ट आ गया, कुकी 1 एंड कुकी 2, ck1 ck2. ck1 में क्या की है, f की है, उसका वैल्यू क्या है, फर्स्ट नेम है. ck2 में क्या है, l की है, उसका वैल्यू क्या है, लास्ट नेम है. तो मैं क्या कर रहा हूं, देखिए कि आई एम जस्ट iterating this cookies array. I'm getting this cookies array by just invoking the get cookies method, which is going to return all the cookie of array, and from there I'm getting one cookie object and assigning into key name. If the key name equals f key, in the first name I am just initializing the value of that cookie. Else if, okay, else if the key name dot equals L key, I think I have to check once. L key, ये की के यदि खुद कोई कुकी फेच होगा तो I'll say here last
name equals to, okay, so ck dot get value. Okay, so that I have did, and this also I'll print. So writer dot println print, I'll print the first name and last name. So just I'm printing without any HTML tag, I'm printing. So f name I'm printing. Okay, and I'll print the l name, last name, l name, last name. Okay, l name last, अच्छा last name में लिखा हूँ, last name, तो last name n capital, you can see. So because कुकी से, कुकी एरे से सारे कुकी को मुझे मिल गया और मैं इधर प्रिंट कर रहा हूँ। ये मैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम प्रिंट कर रहा हूँ। अच्छा, सेकंड सर्वलेट के साथ क्या बाइंड था? इसके साथ बाइंड था फोन नंबर और एड्रेस, फोन नंबर एंड द एड्रेस। फोन नंबर एड्रेस को मैं क्या किया था कि सेशन ऑब्जेक्ट के साथ बाइंड किया था। कैसे बाइंड किया था? ये एरे लिस्ट ऑब्जेक्ट के साथ बाइंड किया था और इस एरे लिस्ट ऑब्जेक्ट को इसके अंदर में सेट कर दिया था सेशन की के अकॉर्डिंग। तो इसको भी मुझे चाहिए इधर, तो मैं क्या करूंगा कि आई नीड session, I need to access the session. So HTTP session, again I'll create a session, not no, new session object, old session object I want to return. I'll say old session, okay, equals to request dot get session, I'll say false in this case. And from that old session object, I need to fetch the value. So old session dot get attribute method is there. What I'll give the key name? तो गेट एट्रीब्यूट मेथड इज यूज, सेट एट्रीब्यूट जैसे सेट कर रहा है, बेस्ड ऑन द की नेम इट्स गोइंग टू सेट दिस एरे लिस्ट ऑब्जेक्ट। गेट एट्रीब्यूट क्या करेगा? बेस्ड ऑन द की नेम इट्स गोइंग टू रिटर्न दिस एरे लिस्ट ऑब्जेक्ट। ओके, लेकिन इसका रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट है एक्चुअली, तो मुझे चाहिए एरे लिस्ट के ऑब्जेक्ट में, तो मैं क्या कर रहा हूं इसको, आई एम इनिशियलाइजिंग इनटू एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, आई विल गिव द लिस्ट और इसको टाइप कास्ट कर रहा हूं एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, करेक्ट। तो देखिए मेरा सी व्हाट आई एरे लिस्ट आई एम गोइंग टू इंपोर्ट फ्रॉम द util पैकेज। ओके, सो आई एम बाइंडिंग गेट एट्रीब्यूट मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? ऑब्जेक्ट टाइप। ऑब्जेक्ट टाइप को हम क्या कर रहे हैं? टाइप कास्ट कर रहे हैं एरे लिस्ट में। क्यों? क्योंकि ये एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। If you see the raise to servlet, see al array list I am binding. Okay, now from this array list I have to fetch this information. So what I'll do here is say that string 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 phone number is there with the list dot get of 0 position में phone number है और string address लिस्ट डॉट गेट ऑफ 1 पोजीशन में मेरा एड्रेस है और मैं इसको भी प्रिंट करूंगा। तो मैं करता हूं, इधर मैं ब्रेक देता हूं, एक लाइन बाय लाइन प्रिंट होगा, तो इधर मैं प्रिंट कर देता हूं फोन नंबर और इसको एड्रेस को। सो जस्ट प्रिंटिंग फोन एंड हियर आई एम प्रिंटिंग एड्रेस। और इसमें मैं क्या प्रिंट करूंगा? इसका वैल्यू है पैन और आधार, तो इसको तो मैं डायरेक्ट इधर ही प्रिंट कर दूंगा। टाइटल डॉट प्रिंट, आई एम प्रिंटिंग पैन प्लस सम स्पेस आधार, ओके, एंड आई एम गिविंग द ब्रेक ओवर हियर। सी, so pan first name last name pan aadhar everything is going to be printed once I click the last input button. Okay, so everything is done now. I have done this part, so let me just check whether everything is coming as per our expectation or not. Okay, so इसके बाद से मैं ये कोड आपको भेज देता हूँ। तो एक बार रन करता हूँ मैं। फर्स्ट रन ऑन सर्वर लोकल होस्ट tomcat 9.0. I'm going to select this, start. तो ये मेरा है, ये this is I'm saving, save
दिस इज आई एम गिविंग कोलकाता, सेव। पैन नंबर हम दे रहे हैं, पैन नंबर 100, आधार नंबर 300, सेव। सर पैटर्न सेट किए ना सर, एरर आएगा। इसलिए एरर आया, देखिए प्लीज मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट। तो ABCDE 1 2 3 4 P, और इसमें क्या है 12 डिजिट दिए थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2। तो ये सेव होगा। और देखिए गोपाल उपाध्याय फर्स्ट नेम, वो फर्स्ट नेम लास्ट नेम प्रिंट किया। अच्छा, ब्रेक के लिए हम रिस्पांस डॉट सेट कंटेंट टैग नहीं लिखे, इसलिए ब्रेक काम नहीं कर रहा है, जस्ट टैग प्रिंट कर रहा है। ये मेरा फोन नंबर ये प्रिंट कर दिया जो सेशन के साथ बाइंड था, और ये दोनों कुकी के साथ बाइंड था, और ये मेरा ये करंट इंफॉर्मेशन है। तो रजिस्ट्रेशन के चारों पार्ट हो गए। अब इसमें क्या करना है, एक ही चीज जस्ट ऐड करना है, रेस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप। तो इसको हम लोग ऊपर भी लिख सकते हैं, इसके पहले भी लिख सकते हैं, रेस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप टेक्स्ट स्लैश HTML। तो पूरा वो ब्रेक अच्छा से वो काम करेगा। So this is our part. Actually, we have set with the cookie. From cookie we have fetched, from session we have fetched, and we just displayed everything over here. So now everything you can see displayed in a proper format. First name, last name, phone number, address, PAN number, and Aadhaar number. Everything is printed. And you can also use the pattern for the first name, last name also. You can also use the pattern for the mobile number also, address also, so that every data will be well validated also. समझ में आया जी सबको? So this is what the part. यही उनका था ना expected requirement. সে লাস্টের পেজটা স্যার বুঝলাম না ঠিক করে, ওটা একবার সামনাসামনি স্যার বুঝতে হবে আপনার কাছে। আমি তোমাকে কালকে তাহলে ক্লাসে এসে বুঝিয়ে দেব। হ্যাঁ 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 ঠিক আছে, এটা তুমি এখন আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি, তোমরা একটু লিখে নাও। হ্যাঁ হ্যাঁ আর আজকে আমরা একটু সেশনটা শেষ করব, কারণ কমপ্লিট এন্ড করব, কারণ আমাকেও একটু খেয়ে দিয়ে একটু রেস্ট নিয়ে বেরোবো আমি। এই থার্ড ফাইলটা কেউ সেন্ড করতে পারবে? হ্যাঁ, আমি সেন্ড করে দেবো। স্যার আপনার এমনি বাড়ি কোথায়? দুর্গাপুর? না, কাকদ্বীপ। কোথায়? কাকদ্বীপে, কাকদ্বীপ। আচ্ছা, কতক্ষণ লাগে ওইখান থেকে কলকাতা? ওখান থেকে ট্রেনে গেলে একটু কম টাইম লাগে, বাসে একটু টাইম বেশি লাগে। ট্রেনে না একটু ভিড় ভাড় বেশি হয়। আচ্ছা। আর ট্রেনটা টাইমে থাকে না, এবার বাস একটু 4 ঘন্টা নেয়, 3.5-4 घंटा। जी हो गया, समझ में आया आप लोग को?